Assalamualaikum and greetings to you all. This is Sabina Victor, the CEO of Embark, and after a short break, we are here today with another presentation, and it's by a guest trainer. And today, our guest trainer is Miss Umme Amara. Assalamualaikum, Miss Umme Amara. How are you? Walaikum assalam, ma'am. Alhamdulillah, I'm good. What about you? I'm absolutely good. G. Miss Ume Amara, introduce yourself to our dear audience. Alright, so audience, Assalamu alaikum. My name is Umme Amara and I am an associate clinical psychologist and an NLP coach. Apart from that, I have completed my MPhil in clinical psychology from Maria University. I am associated with prestigious organizations including American Psychological Association and Australian and New Zealand Mental Health Association. Good, excellent. What an impressive profile, Miss Ume Amara. Thank you, ma'am. Today's you're most welcome. Today's topic is something which is close to everyone's heart, is including mine. That is stress management. We all know that before we go on a break, teachers are always given additional work to do, such as the bi-monthly examination, the paper correction. Then is working. The class teachers have the report cards. So it's all quite stressful job. And apart from that, teachers even engage in other activities, preparation for sports day, etc., etc. So you see, there's a lot of work that is given to the teachers to do, and they do a wonderful job. It's like commendable, the job that the teachers do. But the thing is this, that when they do a certain piece of work, they are then under stress. So the topic which you have chosen, Miss Ome Amara, is something which is quite important for our dear teachers and educators. The tips and strategies which you are going to share today with them is going to be something very valuable, helpful to them, especially when they rejoin work after the winter break. So, Miss Ome Amara, introduce yourself to our dear audience. Audience, my name is Umme Amara and I am an associate clinical psychologist. Today I am here with a presentation for you all on stress management for teachers. First of all, every teacher who is listening to me, I am so proud of you all क्योंकि आई नो वेरी वेल कि छुट्टियों से पहले आप लोग कितना सारा काम, कितना सारा वर्कलोड, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर कर यहाँ पर आए हैं अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए। लेकिन आई एम श्योर शायद वो इतने सारे वर्कलोड के बाद जो बर्नआउट होगा उससे आप लोगों में से काफ़ी लोग परेशान होंगे कि ये जो बर्नआउट है ये हमारी फैमिली लाइफ और बाकी चीज़ों को भी अफ़ेक्ट कर रहा है, तो हम उसे किस तरीके से कंट्रोल करें या किस तरीके से मैनेज करें। So, thank you, Miss, for inviting me here and giving me an opportunity to talk on the most important topics. So, let us start with the stress management workshop. Next. Yes. All right. So your introduction is done. Yeah. Okay. All right. So, the objective of this workshop is to understand what is stress, types of stress, identification of stress, and then at the end, techniques of managing stress. So, I All have right. a question for all the audience. Hmm. Can you all please let me know what is stress? You people can tell me in the layman term also. All right. Yes, dear audience, type your answers in the YouTube comments and let me know what is stress according to you. Yes, waiting for your responses, dear audience. Yes.
Teachers, you don't need a dictionary, you can define stress in any way, in simple words also. Yes, what's stress for you? If you ask me, Miss Umme Amara, let me start. For me, stress is like being overburdened with work, and where I don't get to relax. So that is stress for me. That's right, ma'am. Yes. Okay, we are getting responses. Miss Rosina saying anxiety. Miss Aruj Amir is saying work pressure. Um, any other response? Yes, any other response? So far, we have got two responses. They will be coming in. I will be sharing them with you, Miss Amara. So let's carry on. Should I change the slide? Sure. Yeah, so let me tell you what is stress. Basically, the stress is a normal reaction which we are facing daily, बट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम जब हमारी लाइफ में ऐसे प्रेशर्स आ जाते हैं डे टू डे वर्क के अंदर जो हमारी फंक्शनिंग को हिंडर करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यू ऑल बीइंग अ टीचर कैन रिलेट टू दिस कि आप लोग घर जाने वाले हैं और अचानक एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्स यू एंड से दैट ये काम है और अभी ये आधे घंटे में करके देना है या देयर इज़ अ मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और समथिंग लाइक दैट कुछ इस तरह की चीज़ क्योंकि व्हेन वी ऑल आर गोइंग होम थके हारे अपना काम कंप्लीट करके तो वी आर हैप्पी कि बस अब काम कंप्लीट हो गया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई एंड वी आर गोइंग होम लेकिन जब अचानक आपको ये बता दिया जाए कि इतना टाइम स्लॉट है और आपको उसके अंदर ये काम करके देना है तो यू फील कि आपके ऊपर एक प्रेशर आ गया यू फील स्ट्रेसफुल और आपके लिए उस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है राइट देयर एंड देन यू फील फेयरफुल कि अगर मैं अपना ये काम नहीं कंप्लीट कर पाई तो पता नहीं मैम या सर के सामने मेरी क्या इमेज बन जाएगी या मैम और सर मुझे कहेंगे कि द टीचर इज़ नॉट एफिशिएंट या फिर आपको अपनी खुद ही सेल्फ एफिशिएंसी के ऊपर डाउट होने लगता है तो सच थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस द वे यू फील एंड द वे यू बिहेव वो सब चीज़ें बिल्कुल चेंज होने लगती हैं नेक्स्ट सो आई हैव अ कोट फॉर यू ऑल और अगर आप इसको गौर से पढ़ें और इसके ऊपर गौर करें तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस इट इज़ आवर रिएक्शन टू इट स्ट्रेस तो ऐसी चीज़ है जो आती है और चली जाती है स्ट्रेस कभी भी हमें नहीं मारता बट स्ट्रेस की वजह से द वे वी बिहेव द वे वी फील एंड द वे वी रिएक्ट वो चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट let me tell you the types of stress. There are two types of stress. Next. So, number one is eustress. Majority of the time हम लोग eustress में आते हैं. Eustress is something जो which motivates, which gives you energy. Eustress is short term. Eustress usually comes within our coping abilities. For example, वेन एवर वी आर इन यू स्ट्रेस और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो हमारे पास इतनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज और कोपिंग एबिलिटीज़ होती हैं कि हम यू स्ट्रेस को ओवरकम कर जाएं यू स्ट्रेस ऑल्सो इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट अब यू स्ट्रेस की एग्जांपल ये हो सकती है फॉर टीचर्स कि कुछ इस तरह का काम आया हुआ है जिसके बाद आपसे कहा जाएगा कि जैसे ही सब लोग ये काम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा या you will get a bonus or a sort of reward or something so यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर तो फील होगा बट देन इट विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस यू विल फील एक्साइटेड यू विल फील मोटिवेटेड कि यार आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वर्क आई विल बी गेटिंग माई रिवॉर्ड और समथिंग and it will be within your coping abilities you'll know that how to handle this matter and how to overcome it the next type of stress is distress जिसके अंदर we people are living daily and I am pretty sure हम सब कहीं ना कहीं अभी distress वाले मोड में ज़रूर होंगे अगर हम गौर से देखें अपने आप को या अपने आप की situations को
So distress decreases your performance. It can even cause physical and mental problems. Apart from that, when you are distressful, you obviously feel unpleasant. डिस्ट्रेस जब आता है तो आपकी कोपिंग एबिलिटीज़ वहाँ पे काम करना छोड़ देती हैं, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे आपका माइंड एकदम शट डाउन हो चुका होता है और आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, कैसे करना है। डिस्ट्रेस कैन बी शॉर्ट टर्म एंड अ लॉन्ग टर्म टू, और डिस्ट्रेस से एंजाइटी भी हो सकती है और बाकी कंसर्न्स भी। नेक्स्ट। Alright, so as a teacher, I want you all to tell me that how you people can identify stress. क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर हम सब लोग रोज स्ट्रेस से गुजरते हैं। सो एज अ टीचर कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि मैं स्ट्रेसफुल फील कर रही हूँ, और अगर कोशिश की तो आपको कैसे पता चला, किन सिम्टम्स से या कौन से ऐसे बिहेवियर से आपको ऐसा फील हुआ कि यू आर इन स्ट्रेस राइट नाउ? प्लीज़ अगर Yes, कोई अपना yes, एक्सपीरियंस yes. शेयर करना चाहे। All right. Teachers, please share how are you able to identify that you are under stress? Let me start again, Miss Amara. Like, how I'm able to identify that I'm under stress when it affects me mentally, when even physically. Like, if I'm able to feel, pain in my back of my neck, as well as my shoulders, I get headache or migraine, that is a symptom, the biggest symptom of being stressed out. And also that I'm unable to concentrate, and and it leads to so much of overthinking that somewhere it affects even my self esteem. So that's a way of me identifying stress in myself. So people. Excellent. Yes. So yes, many teachers are saying that we heard that bounce back and we get excited. Burden at workplace, and Hizra is saying that when she's under stress, she doesn't like to talk to anyone, but she likes to sit quiet. So that's her way of identifying stress. And also Ms. Zaida is saying that when they are under stress, like they are always in the hurry of trying to wind up a certain piece of work, and in that winding up then they do something wrong, only a mistake Yes, happens. yes. Things get messed up. Messed up, yes. So that's also a part of stress, being under stress. Okay, Miss Aruj is saying that when she's under pressure and her body gives her the symptoms such as pain in her headache, a pain on her shoulders, and then a headache, and then she says she's absent minded. Yes, obviously, you are unable to concentrate when a person is under stress, you are unable to concentrate. So, that is also another way of identifying stress. Absolutely all right. The answers of audience are pretty relatable and they all are absolutely right. All right. So let's move to the next slide. So here's how you can recognize stress in your body. There are four ways. Like I have divided it in four ways. Like emotionally, how stress is affecting you, cognitively किस तरह affect कर रहा है, और physical और behavioral also. So let's start with the emotional part. For example, as a teacher, अगर आपको कोई नया टास्क दिया जा रहा है and you are feeling fearful, you are feeling angry, और आपने जाकर मे बी वो गुस्सा अपने किसी कुलीग के ऊपर burst आउट कर दिया, या आपने गुस्से में आके क्लास के अंदर कुछ इस तरह की बात कह दी लाइक टू योर स्टूडेंट्स, क्योंकि यू आर फीलिंग सो मच स्ट्रेसफुल बैक एंड पर और आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, तो इमोशनली लाइक यू आर बर्स्टिंग आउट। इसके अलावा या तो फिर यू आर फीलिंग नर्वस, आप इरिटेट हो रहे हैं, या तो फिर क्लास से जब आप बाहर निकले देन यू फील सैड कि ओ माय गॉड व्हाट आई डिड,
मतलब मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था वहाँ पर। लेकिन सी इट्स नॉट इन योर हैंड, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे कि यू आर फीलिंग स्ट्रेसफुल बिकॉज़ ऑफ समथिंग जो बैक इन द माइंड आपको इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है। और फिर जब आप सैड होंगे देन यू विल फील लोनली। इसके बाद यू विल फील होपलेस कि शायद इस ये सिचुएशन मुझसे कंट्रोल ना हो पाए या ये सिचुएशन वर्स हो गई है। यू विल कीप ऑन वरीइंग कि ये मैंने क्या कर दिया, एंड देन इसके बाद यू विल बी मूडी। तो ये कुछ इमोशनल सिम्पटम्स हैं जो यू विल फील जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे। नाउ लेट्स कम ऑन द कॉग्निटिव पार्ट। कॉग्निटिव पार्ट के अंदर ये होगा कि आपको रेपिटेटिव थॉट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, या कोई टीचर है जिसको एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है, या कोई एक वर्कशॉप कंडक्ट करनी है, और उसकी वजह से शी इज़ और ही इज़ फीलिंग स्ट्रेसफुल, तो बार बार उनके माइंड में वही थॉट्स आएंगे कि पता नहीं प्रेजेंटेशन सही हो पाएगी या नहीं, कंटेंट ठीक है या नहीं, ऑडियंस सेटिस्फाई होगी या नहीं, या कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए उस दिन। सो यू विल कीप ऑन वरीइंग, और आपके माइंड में सेम वही थॉट्स आते रहेंगे विच विल इरिटेट यू। इसके अलावा ये कि यू विल फील कंफ्यूज। आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी। कोई एक नॉर्मल अगर घर का भी डिसीजन होगा, फॉर एग्जांपल आप काम से घर पे जा रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग कि आज खाने में क्या बनाना है, या समथिंग लाइक दैट, या आज कहाँ पर जाना है आउटिंग के लिए, तो यू विल बी अनेबल टू डिसाइड, क्योंकि बैक इन द माइंड अनकॉन्शियसली इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा आपके ऊपर कि आपसे एक ये छोटा सा डिसीजन लेने में भी इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। और अगर आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसके अंदर भी आपको कंसंट्रेशन में बहुत मसला आएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम रियली श्योर कि वो आप सब फेस कर रहे होंगे, बीइंग फॉरगेटफुल। कि आपने अभी टू डू लिस्ट बनाई है, आपने सोचा है कि अभी ये काम करना है, और थोड़ी देर बाद आपके दिमाग से ही वो निकल गया। माइट बी पॉसिबल कि वो इतना इंपॉर्टेंट काम हो कि आपको सबमिट करवाना हो 2-3 घंटे के अंदर। आई नो देर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स, अ लॉट ऑफ क्या, बल्कि एवरी टीचर, हर टीचर के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होता है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होती है। आई अंडरस्टैंड बीइंग अ टीचर इज़ नॉट ईजी। सो इतना सारा स्ट्रेस, और उसके बाद फिर आप अगर कोई एक चीज़ ऐसी भूल जाएं तो यू योर सेल्फ फील लाइक कि शायद आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, इस वजह से मैं भूल गई, या मैं किस तरह भूल गई। तो यहाँ पे एक सेल्फ ब्लेम का एलिमेंट आ जाता है कि फिर हम खुद को ही ब्लेम करने शुरू कर देते हैं कि शायद हम इतने केपेबल नहीं हैं, हमने याद नहीं रखा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा होता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। whenever you'll be in stress you'll feel sick, you'll feel like कि मुझे टेम्परेचर हो रहा है या कुछ भी इस तरह की चीज़, लेकिन इन एक्चुअल आपको फीवर वगैरह कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे कि यू विल बी फीलिंग सिक। आपकी जो ब्रीथ है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा स्वेट करेंगे, यू विल शेक वाइल टॉकिंग टू अदर्स। या और इसके अलावा जो मैम सबरीना ने शेयर किया कि उनको बहुत ज़्यादा हेडेक्स होने लगते हैं, माइग्रेन होने लगता है, और ऑडियंस में से भी किसी ने मुझे ये बात बताई कि हेडेक्स आते हैं। इसके अलावा चक्कर आना, फीलिंग पेन इन योर मसल्स, इतना सारा काम करने के बाद, या शायद हो सकता है उस दिन आप कोई इतना ज़्यादा काम ना भी करें, फिर भी जब आप लेटें तो यू विल फील लाइक कि ओ माय गॉड, शायद मसल्स के ऊपर सारी दुनिया का बोझ आ गया है। आपको इस तरह की फीलिंग आएगी कि इतनी तकलीफ़ हो रही है। इसके अलावा फटीग होगा, और योर माउथ विल बी ड्राई। बेशक अगर आप इतनी बात नहीं भी करेंगे किसी से, स्टिल योर माउथ विल बी ड्राई। तो ये सारे स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स मूव टूवर्ड्स द बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस। लैक ऑफ स्लीप, आपको नींद नहीं आएगी। ऑब्वियसली जब रात में आप लेटेंगे तो स्ट्रेस की वजह से कितनी सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी कि पेपर्स चेक करने हैं, एग्ज़ाम्स हैं, या अगर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो पेपर बनाकर सबमिट करवाना है। इसके अलावा लेसन प्लानिंग करनी है, वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है किसी चीज़ के लिए, या अगर स्पोर्ट्स डे है, कोई और ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसा कंटेस्ट होने वाला है बाहर जिसमें आपके स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके स्कूल को, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी। और जब ये सब चल रहा होगा तो डेफिनेटली नींद तो आएगी नहीं। इसके अलावा चेंजेस इन द एपेटाइट। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who stop eating when they are in the situation of stress. And on the other side, there are a lot of people
who just can't stop eating when they are in the situation of stress. So, audience, I would love to listen your view on it कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं, the one who stops eating in the situation of stress या फिर the one who keeps eating. Yes. Teachers, which situation are you in? Usually, you are in when you are under stress. Do you stop eating or do you eat a lot? Yes, Miss Umme Amara wants to know. If you ask me, Miss Umme Amara, I will start munching on chips. Oh, Really, I would start munching. Because even overeating is also not a good sign because that yes, is also linked with stress. yes, yes. Okay, Miss Sidra is saying she will stop eating. Miss Rosina is saying that she will stop eating. Anyone else? Anyone else? Miss Khizra, are you there? So there are two teachers who are saying that they will stop eating. So Miss Zaida is also saying that she will stop eating. So majority are falling into the second category that they will stop eating. Yeah, personally, I also stop eating when I am in a stressful situation. But then I sit back and analyze के क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, and then I try to like cope up with it. So You we all are in the same category. Yes, Achha, and you know yeah. what So happens yeah, with me? Sometimes if I'm so much under stress, मैं ये भी भूल जाती हूँ कि like I have to do other chores and I even forget to take a glass of water. I skip water. true, true, absolutely true. ये होता है Yeah, मेरे साथ. yeah. So, acha, the next point, ke increase intake of caffeine, cigarette, or any other sort of drug. There are a lot of people जो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर सिगरेट या फिर कोई भी ऐसे किस्म का ड्रग जो उनको एक सुकून दे, आराम दे. देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स और पिल्स जिसको खा के आपको बहुत सुकून से नींद आ जाती है, बहुत आराम आ जाता है. तो यूजुअली पीपल जस्ट गो टू दैट ऑप्शन ताकि उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाए. इसके अलावा नर्वस हैबिट्स, बीइंग अ टीचर आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये खुद के अंदर ऑब्जर्व करा है या अपने स्टूडेंट्स के अंदर ऑब्जर्व करा है. अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट बाइटिंग देयर नेल्स व्हेन दे आर फीलिंग स्ट्रेस. जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो दे स्टार्ट बाइटिंग देयर नेल्स, या तो फिर दे स्टार्ट लाइक ईटिंग देयर लिप्स. Lips, yes, या biting the lips, yeah. Yeah, biting nails or eating lips. So this shows कि you are feeling stressful. इसके मेरे अलावा जी जी. I bite my lips if like when I'm like under stress. अभी या. just 2 days ago मैंने ऐसी हरकत मैंने की थी. I started biting my lips and then later I realized मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया. Then हम्म. I calm myself down like by counting backwards. मैंने कहा just to de-stress myself. मैंने कहा it's okay, it's okay, it's okay. तो मैंने कहा हो जाता है. तो then I felt better. तो ये था कि आई सेड नहीं लाइक हम भी तो इंसान है वी मेक मिस्टेक्स तो क्या हुआ तो Yes. तो दैट्स हाउ आई टेल माई सेल्फ आई टॉक टू माई सेल्फ स्ट्रेस This थिंग्स is amazing and I'm glad to hear your experience that आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश की and you forgave yourself, ये यस सोचकर कि हम भी इंसान हैं और हम भी गलतियां कर सकते हैं. Yeah. So the last point is avoiding situations. There are a lot of people जो इस तरह का काम करते हैं. They try to avoid situations क्योंकि उस टाइम पे उनका माइंड शट डाउन हो जाता है और उन्हें नहीं समझ आ रहा होता कि क्या करना है, कैसे करना है. So the only way left is to just run away from that situation or just escape. So ये सारे symptoms थे जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू रिकॉग्नाइज स्ट्रेस इन योर बॉडी. आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द सिम्टम्स ऐसे होंगे जो आप सब ने फेस किए होंगे कहीं ना कहीं. कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि उन्होंने इनमें से कोई सिम्टम्स फेस ना किए हों? इज देयर एनीवन? so far they all are agreeing with you या. ऑलराइट, थैंक यू. नेक्स्ट. नेक्स्ट.
या सो यहाँ पे स्पेशली आई हैव ब्रॉट दी स्ट्रेसर्स जो टीचर्स फेस करते हैं। वो स्ट्रेसर्स तो ऐसे थे जो हर कोई फेस करता है, बट यहाँ पे जो मुझे कुछ ऐसा मिला कि टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ क्या होती है, जब उन्हें पता चले कि यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ वर्क होम। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स इन योर क्लासेस जो बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, बुली कर रहे होते हैं आपको, और दे आर अनकंट्रोलेबल। इसके अलावा द होल क्लास इज़ डिफ़िकल्ट, या फिर द स्कूल इन विच यू आर वर्किंग वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट सपोर्टिव। पेरेंट्स आर पुटिंग प्रेशर ऑन यू दैट यू आर नॉट अ गुड टीचर, या फिर आप सही से पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों को। इसके अलावा जब टीचर्स की इवैल्यूएशन हो रही होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल आइसोलेशन, के अगर मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ या स्कूल का जो एक कल्चर है उसके साथ, तो आई विल बी लेफ्ट आउट या आई विल फील आइसोलेटेड। तो एक ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है। और इसके अलावा सबसे मेन स्ट्रेसर ये है कि जॉब अनसर्टेनिटी, कि आपको हर वक्त यही डर रहता है कि ऐसा ना हो कि अभी मेरे इस एक्ट या इस बिहेवियर के बाद मेरी जॉब चले जाए। इसके Hmm. अलावा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से जो बहुत ज़्यादा बुलिंग का वो आ रहा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉक्सिक वर्क प्लेस, जिससे आप सब बिल्कुल ही एग्री कर सकते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स राइट नाउ हु आर वर्किंग इन द टॉक्सिक वर्क प्लेस। क्यों काम कर रहे हैं वो टीचर्स? कैन यू ऑल टेल मी कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से टीचर्स टॉक्सिक वर्क प्लेस के अंदर भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? Actually, you know what, Miss Amara, I would like to answer this question. Sometimes, teachers they later they discover that the environment where they are working is toxic, but they can't leave because sometimes it takes time because of the current situation that we are in. The country is facing economic and political. One cannot leave a job so easily and get another job there and then. It takes time to find another job. So teachers are sometimes then forced to then work at that place. Some, those who have, yes, another source of income, or maybe those who have applied for another job, if they get a chance at a new workplace, then definitely they will leave the toxic workplace. But what I feel is that some of them, like जिसे कहते हैं ना मजबूरी में, they are working at the toxic workplace क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं. And abhi, now that we are at the end of the academic term, so most of the schools, like the hirings ho raha hai hiring, lekin it's not very healthy to leave a job, that too in the middle of the session, where you will then later be deprived of your other benefits, like maybe your gratuity, your salary, and all these things. So teachers cannot afford to lose out on that income of theirs. What do you think, teachers? Am I right? What I've shared? Yes. Yes, Miss Rosina is saying one of them is financial problems. Yes, there's some of them cannot leave because of the financial problems also. बिल्कुल, आई डेफिनेटली एग्री विद दैट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो हमारी है। ऑब्वियसली फाइनेंस के बगैर तो वी ऑल आर नथिंग राइट नाउ, जिस तरह के सिचुएशंस वी आर फेसिंग इन द कंट्री। एंड मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। ऑल ऑफ द टीचर्स आर अग्रीइंग विद यू। सो नाउ लेट्स Yes, मूव they are. ऑन विद द टेक्निक्स, जो हमारा आज का मेन पार्ट है। कि सारे स्ट्रेसेस डिस्कस कर लिए हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अब इसको मैनेज कैसे करना है। सो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू ऑल दैट हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। सो नेक्स्ट। नेक्स्ट। Oh, ये है. Yeah, so the first and the most important point is identify the source of stress। जो वही आई रिवर्ट बैक टू दैट स्लाइड जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाउ टू रिकग्नाइज द स्ट्रेस। आपको पता होना चाहिए कि आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो उसके पीछे की सोर्स क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है।
क्या ऐसा इवेंट हुआ है या क्या ऐसी सिचुएशन आई है जिसकी वजह से यू आर इन स्ट्रेस राइट नाउ। सो एज सून एज यू विल आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, तो आपका वो स्ट्रेस खुद ही रिलीज होने शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू बीइंग अ टीचर, आप काम से घर पे गए, घर पे यू समहाउ स्टार्टेड स्कोल्डिंग योर चाइल्ड, और इसके बाद यू फील रियली अपसेट कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने बच्चे को आज तक कभी नहीं डांटा और आज मैंने उसको डांट दिया, क्यों? तो ये कि यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो आप ये कि सुकून से आराम से बैठें और उस पूरे सिनेरियो को सोचें, उसके ऊपर गौर करें कि मैंने ऐसा किया क्यों। समहाउ यू आर एबल टू रियलाइज कि अच्छा, शायद वो कोई ऐसा एक स्कूल का स्ट्रेस होगा, या शायद वो कोई ऐसी एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, या कोई ऐसा एक काम होगा, कोई ऐसा एक ओवरलोड होगा जो जिसका स्ट्रेस मैंने आके निकाल दिया अपने बच्चे के ऊपर। तो व्हेन यू विल ट्राई टू लिंक आउट थिंग्स, तो आपको समझ आएगी और पता चलेगा कि क्या सोर्स ऑफ स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपने इस तरह एक्ट करा। सो आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डीप ब्रीथिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच वर्क्स जब हम सब स्ट्रेस के अंदर होते हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू practice this deep breathing technique with me. So are you all ready? Yes. All right. So kindly sit in a comfortable place. बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़कर एक बिल्कुल सुकून वाली जगह पर बैठें जहाँ पर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। I'm already comfortable. ऑल राइट मैम, ग्रेट। ऑल राइट, सो नाउ क्लोज योर आइज, बिल्कुल एक रिलैक्सिंग मोड में बैठ जाए। नाउ ब्रीथ इन थ्रू योर नोज एंड नाउ ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ। हम ये 10 टाइम्स करेंगे। ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Now you can open your eyes. I hope कि ऑडियंस ने ये चीज़ मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन ट्राई व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेसफुल। द बेसिक पर्पस ऑफ डूइंग डीप ब्रीथिंग इज़ कि आपका सारा फोकस अपने ब्रीथ के ऊपर होता है। You are mindful and you are aware of the fact that you are breathing, you are taking your breath in through your nose and like आप उसको फिर बाहर निकाल रहे हैं थ्रू योर माउथ। तो जब आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस रिलीज होने स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू ऑल कैन ट्राई, और बहुत ईजी सी चीज़ है ये, यू कैन ट्राई डेली, मतलब डेली 4 से 5 बार अगर आप इसको ट्राई करें तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। नाउ नेक्स्ट, ऑल राइट, सो टाइम मैनेजमेंट, वन ऑफ द वेरी 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 इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी। और टाइम मैनेज अगर आपने कर लिया अपनी ज़िंदगी में, तो आई फील लाइक आपने सब मैनेज कर लिया, क्योंकि वी ऑल नो सिंस द बर्थ हमने यही सुना है, टाइम इज़ मनी, और वक्त का ख्याल रखें, इस तरह की चीज़ें हमने सुनी है। तो अब जब हम बड़े हुए हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर आए, तो हमें ये बात समझ आई कि वाकई में टाइम इज़ मनी। अगर आपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया तो आई थिंक आप दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान होंगे। और जिसने टाइम को मैनेज नहीं करा, जिसने टाइम खो दिया, तो समझे उसने सब खो दिया। सो आई विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। यू बीइंग अ टीचर, सबसे पहले तो स्टॉप मल्टीटास्किंग, प्लीज़ फॉर गॉड सेक स्टॉप मल्टीटास्किंग। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि जब हम 4 काम एक साथ कर रहे हैं तो हम शायद आइंस्टाइन हैं या हम बहुत जीनियस हैं, बट सी दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपका दिमाग चारों काम एक साथ कर रहा है, तो आप ये बात लिख कर रख लें कि कोई 2 काम तो ऐसे होंगे आपके जो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक वक्त पर 4 जगह सही से फोकस नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा इंसान है जो फोकस कर भी रहा है, तो वो प्रॉपरली चारों जगहों पर, चारों डोमेन्स के अंदर 100% कंसंट्रेशन कभी भी नहीं दे पाएगा अपनी। सो
इससे बेहतर ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही काम करें एंड गिव आवर 100% ऑन दैट. The next point, set the reminders. See, I just told before कि we all become forgetful और ये स्ट्रेस का एक सिम्टम है. सो इसको ओवरकम करने के लिए स्टार्ट सेटिंग रिमाइंडर्स. यू कैन जस्ट पुट अ रिमाइंडर ऑन योर फ़ोन कि अभी फ़लाँ फ़लाँ टाइम पे आई हैव टू सबमिट दिस थिंग, या फ़लाँ फ़लाँ डे पर आई हैव टू डू समथिंग दिस. या फिर घर के कामों को लेकर भी आप लोग अपने अपने फ्रिज वगैरह या कोई ऐसे टेबल्स हों या कोई भी ऐसी कैबिनेट हो उसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं विच विल हेल्प यू एज अ रिमाइंडर. देयर आर मेनी थिंग्स जिसके थ्रू यू कैन सेट द रिमाइंडर्स. इसके बाद ओनली फोकस ऑन व्हाट मैटर्स. सी, पूरे दिन के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ टास्क विच यू हैव टू डू. सही है, बहुत सारी टास्क हैं ए टू जी, बट व्हाट मैटर्स इज कि आपको सबसे पहले कौन सी टास्क सबमिट करवानी है या कौन सी टास्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो आपको पता होनी चाहिए. व्हेन यू विल नो योर प्रायोरिटीज़ कि आज के दिन के टास्क में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, तो सबसे पहले आप उसी पे फोकस करेंगे और उसके ऊपर ही काम करेंगे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक टास्क्स इनटू द स्टेप्स. काफ़ी मर्तबा ऐसा होता है कि हम कोई टास्क करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा अल्टीमेट एम यही होता है कि हम इसे 1 घंटे में फटाफट ख़त्म कर दें या 2 घंटे में ख़त्म कर दें, जिसकी वजह से वी फील लाइक अ सॉर्ट ऑफ बर्न आउट. और हम वो काम जब पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रहे होते हैं ना, तो फिर हम सेल्फ ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं कि अरे इतना छोटा सा काम है, हमसे ये भी नहीं हो पाया. So the best strategy to complete your work is to break it in the task. जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर्स को अगर कोई लेसन कंप्लीट करवाना है या कोई चैप्टर कंप्लीट करवाना है, तो आई थिंक इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट कि आप एक क्लास के अंदर, एक पीरियड के अंदर वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएं. और जब आप वो नहीं कंप्लीट करा पा रहे होते हैं किसी किसी भी वजह से, तो एट द एंड यू थिंक कि शायद आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, शायद आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं था, या शायद कंटेंट ज़्यादा था. आपको इस तरह के डाउट्स आने लगते हैं. सो इट्स बेटर कि ब्रेक दैट टास्क इनटू द स्टेप्स. आपने आधा चैप्टर आज करा लिया, आधा चैप्टर आपने कल करा लिया. आधे चैप्टर के साथ आप कोई और भी ऐसी टास्क या एक्टिविटी करा सकते हैं ताकि वो वाली चीज़ भी आपकी मैनेज हो जाए. इसके अलावा गेट मोर ऑर्गेनाइज्ड. कोशिश करें कि अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखें, अपनी चीज़ों को मेसी ना रखें. आई एम श्योर एज अ टीचर ऑर्गेनाइजेशन वाला काम शायद आप लोगों से बेहतर और कोई भी नहीं जानता होगा. सो अ राउंड ऑफ एन अपलॉज फॉर ऑल द टीचर्स कि आप सब चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपने प्रोफेशन को कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं. आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल. इसके अलावा ये, रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस. व्हेन वी आर सिटिंग फॉर वर्क देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिंडर कर रही होती हैं या हमें बॉदर कर रही होती हैं. सो यू शुड नो योर गोल, यू शुड नो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सही से काम कर पाएंगे. द मेन पार्ट, प्लान योर डे. यू शुड नो कि पूरे दिन के आपके क्या क्या टास्क हैं. ऐसा नहीं है कि यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग और अचानक आपने सोचा कि चलो आज हम ये काम कर लेते हैं, फिर हम वो भी कर लेंगे. नो, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान और उसके अकॉर्डिंग आप टाइम सेट कर लें कि इतनी इतनी देर में आई हैव टू डू दिस, इतनी देर में आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग, इतनी देर बाद आई हैव टू गो देयर और व्हाट्सोएवर. सो यू शुड हैव अ प्लान ऑफ योर डे. वंस यू विल हैव अ प्लान, एट द एंड जब आप वो सब टास्क को अचीव कर लेंगे ना, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील दैट ओह टुडे, आज मैंने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं. तो इस तरह यू विल फील हैप्पी एंड योर सेल्फ इस्टीम विल बी इंक्रीज्ड. इसके अलावा वही कि राइट डाउन योर प्रायोरिटीज़. यू शुड नो डेली कि आपने क्या क्या काम करना है. मेक अ स्टॉप डूइंग लिस्ट. स्टॉप डूइंग लिस्ट में बेसिकली ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो इतनी ज़्यादा काम की नहीं हैं, बाज़ औक़ात हम अपनी वो चीज़ें भी बीच में स्टार्ट कर देते हैं, एक काम को छोड़ के दूसरे काम के ऊपर लग गए. तो ये वाली चीज़ हमने नहीं करनी. या चेक योर ईमेल्स ओनली 2 times a डे. आई डोंट नो बीइंग अ टीचर आप लोगों के लिए कौन सा मीडियम यूज़ होता है, लाइक व्हाट्सएप यूज़ होता है या ईमेल्स यूज़ होती हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु कीप चेकिंग देयर ईमेल आफ्टर एवरी 5 minutes. कि ऐसा तो नहीं है अभी ईमेल पे कोई इस तरह का काम आ गया है या कोई इस तरह की चीज़ आ गई है, बार बार ईमेल्स आ रही हैं. तो दिस विल मेक यू फील मोर स्ट्रेसफुल अगर आप बार बार अपनी ईमेल्स चेक करते रहेंगे. तो इस तरह जो आपका करंट काम होगा आप उसके ऊपर भी फोकस नहीं कर पाएंगे.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे मेन चीज़ है, हैव ब्रेक्स एंड रिफ्रेश योर माइंड. यू एज अ टीचर आर ह्यूमन बीइंग, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ज़रूरी नहीं है कि आप सारा काम एक ही दिन में कंप्लीट कर लें. प्लीज़ ब्रेक डाउन योर टास्क, और उन टास्क को करते हुए भी हैव अ शॉर्ट ब्रेक, जिसके अंदर हैव अ टी और कॉफ़ी, या फिर आप किसी से बात कर लें, कुछ भी इस तरह की चीज़, बट प्लीज़ डू हैव ब्रेक. छोटे छोटे 10-15 मिनट्स के ब्रेक से व्हाट विल हैपन, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और आपको एग्जॉशन भी नहीं होगी. नेक्स्ट. या effective communication, I feel like we people are not at all effective in communicating. Somehow कहीं ना कहीं we are lacking, जिसकी वजह से शायद हम एक दूसरे को सही से समझ नहीं पा रहे हैं. जनरली भी अगर देखा जाए तो आजकल का ज़माना इस तरह का हो गया है कि बस हमें अपनी बात सुनानी है किसी को, एंड देन वी जस्ट हैव टू रन अवे फ्रॉम देयर, कि आगे बंदा क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उसने क्या समझा. हमें शायद इन सब चीज़ों से गर्ज ही नहीं होता, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है एंड टाइम इज़ रनिंग, और लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ रेस, के टाइम ही नहीं होता कि हम किसी अगले की बात सुने. तो यहाँ पे अफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है कि सबसे पहले तो आप सुने कि अगला बंदा कह क्या रहा है, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब ही क्या होता है? एक्सचेंजिंग योर आइडियाज, फीलिंग्स और अ मीनिंग थ्रू लिसनिंग, स्पीकिंग एंड सीइंग. और और अफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होती है जब दोनों साइड से लिसनिंग हो रही हो, अंडरस्टैंडिंग हो रही हो. तो ये कि गौर से अगले बंदे की बात सुने, और फिर आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, आपकी टोन बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अ लॉट ऑफ टाइम वी से कि नहीं, हम तो गुस्से में नहीं है, बट द वे वी आर स्पीकिंग, हमारी जो टोनल क्वालिटी होती है वो सब कुछ बता देती है, या हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारा जो आई कांटेक्ट होता है, वो सब कुछ कन्वे कर देता है अगले बंदे को. इसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स कि हम किसी की बात सुन लेते हैं और कहते थे अच्छा हाँ ठीक है, समझ आ गया, एंड देन वी गो बैक होम, वी जस्ट रिकॉल कि इसने पता नहीं क्या कहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आई. सो राइट देयर एंड देन जस्ट आस्क क्वेश्चंस. अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही है तो फॉर क्लैरिटी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम, ताकि अगले बंदे को भी ये बात पता चले कि अच्छा ठीक है, दिस पर्सन इज लिसनिंग टू मी, आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, वो मेरी कन्वर्जेशन को अहमियत दे रहा है. इसके अलावा ये कि पैराफ्रेज एंड अफर्म एज अप्रोप्रिएट, लाइक अगर आपने उसकी कोई बात सुन ली है तो एट द एंड आप उसको हल्का सा पैराफ्रेज करके, समराइज करके उसको बता दें, ताकि उसको भी ये लगे कि उसने जो मैसेज कन्वे किया है वो आपको समझ आ गया है. इसके अलावा ये कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यस. नेक्स्ट. Alright, so physical health and exercise. It is really important to maintain your physical health and do exercise when you are feeling stressful. तो जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, यू कैन स्टार्ट डूइंग योगा, और अगर आप योगा नहीं कर पाएँ तो आप एक मेडिटेशन वाले पोज़ में भी बैठ सकते हैं थोड़ी देर, बिल्कुल अपना कमरा बंद करके, लाइट्स को बिल्कुल डिम करके, कोई सूथिंग सा म्यूज़िक लगा लें और उसमें बैठ जाएँ, तो उस तरह भी स्ट्रेस रिलीज़ होगा. या तो इसके अलावा यू कैन स्टार्ट वॉकिंग, यू कैन डू जॉगिंग, कुछ भी आप इस तरह की चीज़ करें, बट कीप एक्सरसाइजिंग डेली, कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट. अब आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल जो पार्क वगैरह जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो अगर आपके घर में बालकनी है, इफ़ यू हैव अ गार्डन और समथिंग, जहाँ पे इवन फॉर 5 to 10 मिनट्स भी आप वॉक कर पाएँ इन अ फ्रेश एयर, तो इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ. So I'll advise you all to please start focusing on exercise. Please start focusing on your physical health. क्योंकि physical and mental health both are equally important. Next. Next. Yeah, seek social support. So social support में it can be your school, college और university के colleagues जिनके साथ you are working, या फिर your friends, your family member. If you are feeling stressful, या if you are in a situation where you need help, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प. किसी से कोई हेल्प मांगने में कोई ऐसी बुराई नहीं है, या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प भी मांग सकते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, अ वेरी गुड कोलीग और एनी सपोर्टिव पर्सन, so I think you are really blissful. So I'll definitely
से यू कि प्लीज़ वहाँ जाएँ, उनसे बात करें। अगर 10 मिनट भी आप उनसे बात करेंगे, अपनी दिल की बात शेयर करेंगे, तो आई एम श्योर आपका स्ट्रेस ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि सी व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाली बात, वी ऑलवेज़ नीड समवन टू लिसन अस, टू एक्नॉलेज अस। क्योंकि वी एज़ अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज़ नीड अफर्मेशंस, एक्नॉलेजमेंट्स एंड वैलिडेशंस। नेक्स्ट। या मेंटेन पॉजिटिव माइंडसेट। यू ऑल शुड सेट अ टारगेट कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ गुजारनी है। आपका व्यू पॉइंट अगर ये है कि आई हैव टू बी परफेक्ट, सो यू हैव टू चेंज योर व्यू पॉइंट while trying के आई लव टू टेक न्यू challenges। वाई यू हैव टू बी परफेक्ट? ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप अपना हर टास्क एक परफेक्ट वे में करें। हम सब में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट फॉर द गॉड who has made us and who has made this universe. So why don't we try to change our viewpoint के I love to take a new challenge? इसके अलावा इफ़ यू हैव फेल्ड एट एनीथिंग, ये ना सोचें कि मैं इसके अंदर फेल हो गई। रादर देन दिस आप ये सोच सकते हैं कि हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो अगर फेल हो जाते हैं तो वो उस चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट जो उनको इस चीज़ के ऊपर फोर्स कर रहा होता है इस चीज़ पे स्टक होने के लिए, या फिर हमारे कोई ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस। सो आप अपनी थिंकिंग को चेंज करें और इस तरह सोचें कि अब जो मैंने गलती की है मुझे उस गलती से किस तरह सीखना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। इसके बाद अगर कोई चैलेंज आ रहा है लाइफ में, डोंट से दैट इट इज़ टू हार्ड, ऑलवेज से दैट आई कैन डू दिस इफ़ आई पुट माई टाइम एंड एफर्ट। इसके बाद ये एफर्ट्स की अगर बात आती है तो ये ना सोचें कि वाई शुड आई ट्राई हार्ड, ऑलवेज थिंक दैट आई विल गिव माई बेस्ट एफर्ट्स। आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दे दें एंड द रेस्ट लाइज ऑन द गॉड। इसके अलावा इफ़ यू आर गिविंग फीडबैक टू एनीवन, कभी भी ये मत बोलें कि दैट एडवाइस इज़न्ट हेल्पफुल। ऑलवेज टेल देम कि आई ट्राई दोज सजेशंस। मतलब अगर आपको कोई इस तरह का कोई फीडबैक देता है, कोई ऐसी चीज़ देता है, तो बिल्कुल ही सामने से ब्लंट होकर उसको ये मत बोलें कि आपने जो बात मुझे कही ना वो फ़ज़ूल थी या मुझे पसंद नहीं आई। आप उसे उसका दिल रखने के लिए ये कह सकते हैं कि येस आई विल ट्राई दैट। नेक्स्ट। या स्लीप वेल एंड हैव अ बैलेंस्ड डाइट। इस चीज़ पे हम जितना ही एम्फसाइज़ करें वो कम है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, आप किसी भी प्रोफ़ेशन के इंसान के पास चले जाएँ, आई डोंट थिंक कि कोई ये बात नहीं करेगा कि स्लीप वेल एंड हैव अ बैलेंस्ड डाइट। क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आई फ़ील लाइक कि आई डोंट हैव वर्ड्स टू इवन एक्सप्लेन कि क्वालिटी स्लीप और बैलेंस डाइट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप सही से सोएंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड सही से काम नहीं करेगा, और जब आपका माइंड सही से काम नहीं करेगा, माइंड एग्जॉस्टेड होगा, तो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ अफेक्ट करेगी, और मेंटल हेल्थ के बाद फिर फिज़िकल हेल्थ अफेक्ट करेगी। इसके अलावा ये कि बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे सुबह टीचर्स जल्दी में हैं, उठने में थोड़ी अगर देरी हो गई और वो अपना नाश्ता स्किप करके जा रहे हैं स्कूल में, फिर पढ़ा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एट सम पॉइंट ये फ़ील होगा कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो इसलिए टीचर्स, आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीज़ सब लोग सुबह नाश्ता करके जाएँ एंड देन गो टू योर वर्क। ये मेरी आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि प्लीज़ डोंट मिस योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। इसके अलावा I आई हैव अ think चार्ट ऑफ या sorry, आप बोले। जी, it's alright. Yeah, I have a chart of anti-stress foods which you can try when you are feeling stressful. There's a long list of it, but मुझे ये चीज़ें पसंद आई तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। When you are feeling stressful, you can take green tea, you can eat banana, you can eat fish, blueberries, almonds, nuts, chocolates. अब चॉकलेट्स का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मली वाले जो चॉकलेट्स हैं कि आप लोग उसको खाए पे Black खा रहे हैं chocolates, देन dark या
डार्क चॉकलेट्स जो आते हैं वो dark यू कैन, chocolate. या वो यू कैन यूज़ फॉर लाइक फाइटिंग विद द स्ट्रेस। इसके अलावा ऑरेंज मिल्क, योगर्ट, ये सब चीज़ें यू कैन ट्राई व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेसफुल, सो इससे भी डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। नेक्स्ट। I wanted to share something related to my diet, how it has helped me in overcoming stress. You know, Miss श्योर। Amara, I was a person who used to have lot of meat, before my father suffered a heart attack. हम लोग मीट और रिच फूड हम लोग बहुत खाते थे, लाइक बिरयानी, कोरमा, हलीम वगैरह, एंड लॉट ऑफ मीटी डिशेस, नॉट द रेड मीट बट चिकन वगैरह हम लोग बहुत वो खाते थे, बट इट यूज टू बी मोर इन द रिच फूड साइड, ठीक है. But ever since my father suffered a heart attack, that was in 2021, and he survived it, and he's at home, he's doing pretty well. you know we are following now his diet plan, to keep ourselves healthy. We have now switched over to vegetables. Believe me or not, Amara, I enjoy eating now, loki, marrow, bangan, mixed vegetable, that is carrots and even cucumbers, and my favorite is now, what you can say, karele. I love karelas now, and I always, like, make sure that I get to eat it at least once a week, karelas. So, and vegetables help me to feel lighter, and it helps in the digestion also, plus it also helps to keep me mentally and physically healthy. Plus मैंने ये भी नोट किया है कि it also, it's kept me in shape. And being in 40s, I always give myself the credit for controlling my mouth, कि कम से कम I have now kept myself on a healthy diet. And I tell people, okay, and whenever we want to have meat, we have fish or we have chicken, like sometimes it's put in the fried rice, and or we have it like halim, like it's all right moderately. अब हम खाते हैं halim, biryani, all that, it's all moderately, but we cook it in olive oil. So we have changed a lot of our diet plans, everything, and it has helped a lot, in keeping the family healthy. And we eat less of outside food. Agar just say faras karo, if I want to have french fry, I would rather have french fry which is fried in olive oil, or if I want to have a paratha, I would rather have a paratha which is less oily, but it's cooked in olive oil. So this is how I keep myself and my family now, healthy. थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस इन योर डाइट प्लान। आई होप कि यहाँ पे ऑडियंस ने काफ़ी कुछ सीखा होगा आपके डाइट प्लान से, एंड लाइक आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद इट। You're most welcome. या सो फ्री टाइम एक्टिविटीज़, नाउ यहाँ पे अब काफ़ी लोग कहते हैं कि पेंटिंग, गार्डनिंग, स्विमिंग ये सब तो बच्चे करते हैं, राइटिंग तो बच्चे करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बच्चे और बड़े सब लोग कर सकते हैं, एंड आई एज अ साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट हम सब के अंदर एक ऐसा इनर चाइल्ड होता है, हम सब के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है जो कभी ना कभी बाहर निकल के आता है किसी किसी ना किसी एक्टिविटी में या किसी चीज़ में। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डू पेंटिंग, जो गार्डनिंग बहुत अच्छी करते हैं, और जब वो करते हैं तो बहुत शौक से दिल लगा के करते हैं। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को कुकिंग करने में, स्विमिंग करने में मज़ा आता है। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू डू पार्टिसिपेट इन सच थिंग्स, कि जब भी आपके पास कोई ऐसा फ्री टाइम हो, और अगर फ्री टाइम नहीं भी निकल रहा हो तो ये आपका काम है कि आप अपने पूरे स्केड्यूल में से कम से कम 15 से 20 मिनट या इवन आधा घंटा निकालें और इन सब चीज़ों को दें, क्योंकि दिस विल मेक यू फील हैप्पी। इससे आपकी सेल्फ इस्टीम भी बूस्ट होगी, आपका मूड भी इससे इन्हेंस होगा, और ऑटोमेटिकली आपका जो सारा स्ट्रेस है और सारी थकन है वो भी रिलीज़ हो जाएगी। ये तो यहाँ पे खैर कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों की अपनी डिफरेंट हॉबीज़ हैं जो आप लोग कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। Gratitude. या एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी एज अ ह्यूमन बीइंग हम काफ़ी मर्तबा नाशुक्री कर जाते हैं अल्लाह ताला से,
कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है या वो चीज़ नहीं है, कहीं न कहीं हमें ये होता है कि काश हमारे पास ये होता, उसके पास भी तो ये है, या जो अभी हमारे पास है काश हमें उससे बढ़ के मिलता। तो काफ़ी मर्तबा ऐसा होता है कि हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं, हम ये देखना भूल जाते हैं कि कितनी सारी नेमतें हैं जिनसे हमें अल्लाह ताला ने नवाज़ा है, जो बाकी लोगों के पास इस टाइम पे नहीं है। जैसे सबसे बड़ी नेमत जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए वो ये कि हम सब यहाँ बोल सक रहे हैं, सुन सक रहे हैं, एक दूसरे को देख सक रहे हैं, बात कर सक रहे हैं, सही सलामत हैं, वी Miss आर Amara. ब्रीथिंग वेल। Miss Amara, sorry to interrupt you. We just have 5 minutes, so we just need to rush with the last few slides. या श्योर मैम, ये बस आखिरी स्लाइड है। Okay. ओके, सो यस, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वी शुड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। हर रात सोने से पहले आप लोग अपने जहन में कोई भी 5 ऐसी चीज़ें लाइएगा जिसके लिए आप लोग ग्रेटफुल हैं। ये करने का मकसद, इसको प्रैक्टिस करने का मकसद बेसिकली ये है कि जब आप रिकाउंट करना शुरू करेंगे ना कि दिन में आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स थी, क्या-क्या आपके काम हैं जो अल्लाह ताला ने करवा दिए, तो ऑटोमैटिकली आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाएगा और आपको ये फ़ील होगा कि येस, गॉड इज़ विद अस एंड वी आर ब्लेसफुल। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। या एक और स्लाइड रहती है, आई वांट यू ऑल टू रिपीट इट विथ मी। नेक्स्ट। Anji, repeat after me. या, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माय चैलेंजेस I am stronger than my challenges, एंड माय चैलेंजेस and my challenges आर मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर। are making me stronger, and I agree with you. Yes. So that is all from my side. I am open for the question and answer session. Okay, so that brings our presentation to an end. So we are left with just a few minutes. If you have questions, please put them in WhatsApp, and I will share your questions with Miss Amara, and she will answer accordingly. Okay. So thank you so much, dear teachers, for taking out time for today's live session. I definitely enjoyed it because it was quite relatable, and I also enjoyed sharing my input. So thank you once again, Miss Amara, for your valuable time and input. I and the teachers, they loved your session. They loved the presentation, the way you have been sharing your insight and ideas. So hopefully in the coming year, I look forward to collaborating with you with one more project. All right. So take Inshallah, for sure. Thank you so much for having me. And thank you so much, audience, for participating and listening to me patiently. आई होप जो मैंने सारी एडवाइसेस दी हैं, जो सजेशंस दिए हैं, आप लोग उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और आज का जो सेशन हुआ उससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। Okay, so take good care of yourselves. Okay, dear audience and Miss Umme Amara. Allah Hafiz. Goodbye. ऑल राइट, अल्लाह हाफिज़।